friends, welcome to Science Surfers. Today we are going to start our chapter Atoms and Molecules. We have studied about matter. Matter is anything that occupies space and has mass. हम लोग इससे पहले मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे उसी को हम कहते हैं मैटर. और हमारे पास शुगर, सॉल्ट, डायमंड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा, एवरीथिंग इज अ मैटर. An Indian philosopher Maharshi Kannad said that on dividing matter we will get smaller and smaller particles and ultimately we are left with the smallest particle known as परमाणु. मैटर के बारे में इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड ने क्या कहा कि अगर हम किसी मैटर के छोटे छोटे पीसेस करते जाएं, हम उसको ब्रेक करते जाएं, सो अल्टीमेटली दैट विल टर्न इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स और लास्ट में हमारे पास सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और उसी स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल को महर्षि कन्नड ने नाम दिया परमाणु. ऐसे ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने भी सेम स्टेटमेंट दी, लेकिन उन्होंने जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है उसको एक न्यू नेम से आइडेंटिफाई किया, दैट इज एटम्स. British chemist John Dalton, he also provided the basic theory about nature of the matter and said that the smallest particle of matters are atom. Means कि सभी matter small particles से मिलके बने होते हैं and all these small particles are known as atoms. जैसे एक large building छोटे छोटे bricks से मिलकर बनती है, हमारी सबकी living body it is made up of cell. Similarly, all the matter is made up of smaller particles called atoms. अब मैटर के नेचर के बारे में जब साइंटिस्ट को पता चल गया, now they wanted to know how the elements combine together and what happens when they combine. So the combined form of atom is now called molecule. और जो combined form of atom है अभी हम उसको बोलते हैं molecules. And so therefore all the matter is made up of small particles called atoms and molecules. Two scientists, Anton Laurent Lavoisier and Joseph Louis Proust, gave two laws explaining the chemical combination of elements. So Lavoisier और Proust ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि how the elements combine together to give compounds. So all the chemical reaction which take place follow these two laws. Therefore, these laws are known as law of chemical combination. So there are two laws. One is law of conservation of mass and law of constant proportion. What is the law of conservation of mass? According to this law, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. कि किसी भी reaction में mass ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दैट मीन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज unchanged. Take an example. We have got A and B. These two substances combine to form two other substances, that is C and D. So this is a chemical reaction in which A and B are the reactants and C and D are the products. So when both of them combine together, the mass of the A and B, suppose it is x gram, after reaction this will be equal to the combined mass of C and D, that will also be equal to x gram. That means no change in the mass has taken place, which is following the law of conservation of मास. इस लॉ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू. इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, वी हैव टेकन टू सॉल्यूशंस. One is sodium sulfate solution in a conical flask and barium chloride solution in this test tube. Okay. Now we will measure their mass and it comes out to be 300.23 grams. Now we will tilt the flask and we will allow the solutions to mix together. There occurs some chemical reaction and a white precipitate is formed. So this formation of white precipitate means some chemical reaction has taken place. But if we measure their mass after the reaction, that is also 300.23 grams. That means initial mass of the reactant and the final mass of the product is equal. तो रिएक्शन के बाद और रिएक्शन से पहले दोनों का मास
equal है. See, we have a very simple equation, that is carbon plus oxygen combined to form carbon dioxide. In this equation, we see that carbon and oxygen, they are the reactants and carbon dioxide is product. Carbon has a mass of 12 grams and one atom of oxygen has a mass of 16. So here we have two atoms, so that will combine to form 32 grams. Right, so both of them will combine to form 44 grams. That means mass of reactant is 44 grams. Now come to the product side. In products, we have got carbon and oxygen combined together, right? So their mass will be equal to 1 carbon is weighing 12 grams plus oxygen is 16 to 32. It again comes out to be 44 grams. That means mass of the reactant and mass of the product is equal, which verifies the law of conservation of mass. The second law we have is the law of constant proportion. According to the statement, in a chemical compound, the elements are always present in a definite proportion by mass. दिस मीन्स कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में उसके जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी मास रेशो हमेशा फिक्स होगी. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. वाटर के मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच आर फॉर्मिंग टू फॉर्म वन वाटर मॉलिक्यूल एज H2O. दैट मीन्स दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम मिलके ही एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रिपेयर करेंगे. तो दिस रेशो विल ऑलवेज बी फिक्स. Okay, and secondly, if we see the ratio of their masses, that is one atom of hydrogen has mass of 1 gram. So here we have two atoms, so it will be equal to 1 into 2. Then an atom of oxygen has a mass of 16 gram. So if we see the ratio of their mass, we see that it is 1:8. So it is always fixed. One molecule of water जब भी बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशो विल बी 1:8. Similarly, we have the example of ammonia. Ammonia contains one atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen, which are in the ratio 1:3. Means नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशो अमोनिया में हमेशा 1:3 रहेगी. और अगर हम उनके मास की रेशो देखते हैं, one atom of nitrogen has a mass of 14 grams, whereas hydrogen 3 grams. So that means in ammonia, 14 gram of nitrogen is always combined with 3 gram of हाइड्रोजन. तो जब भी अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनेगा उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मास रेशो विल ऑलवेज बी 14:3. ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन, okay, he gave a theory to explain the nature of matter. He also took the name atoms as given by the Greek philosophers Lysippus and Democritus. उन्होंने एटम नाम दिया था, तो डॉल्टन ने भी यही कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं एक मैटर के वो एटम्स हैं. एंड he proposed a theory which was based on the 2 laws of chemical combination. So the main postulates of the Dalton atomic theory are, number 1, matter is made up of teeny particles called atoms. उसने बोला कि सभी मैटर स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं और उनको हम लोग एटम कहेंगे. एटम्स आर indivisible. We cannot divide them further. They are indivisible particles and they cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. That means mass always remain conserved. Atoms of a given element are similar in mass and properties. मीन्स हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, सपोज वी हैव गॉट एन एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा. सो हाइड्रोजन के सभी एटम्स विल ऑलवेज बी सेम इन मास एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दे आर 2 different elements, they will be different in their masses and properties. Then atoms combine in small whole number ratio to form compounds. Now these 2 elements also can combine to form a molecule, that is water, in which hydrogen and oxygen are combining in the ratio 2:1 by their volume. So ये ratio भी हमेशा fix रहेगी. In a given compound, the relative number and kind of atoms are constant. That means water, जब भी हम बात करेंगे तो water में यही दोनों atoms मिलेंगे, H and O. Okay, and the ratio will always be
फिक्स। दैट मीन्स किसी भी कंपाउंड को बनाने में जो उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं और काइंड ऑफ एटम वो हमेशा फिक्स रहेगा। यानी वाटर तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, लेकिन उनके नंबर भी फिक्स होंगे। मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम विल ऑलवेज कंबाइन विद 1 एटम ऑफ oxygen. So these were the main postulates of the Dalton atomic theory.